पापुम वाले डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर के साथ मैं आज बातचीत किया रिगार्डिंग कमिंग अप टू बॉन्ड कॉल ऑन 5 नवंबर। उसका एक झलक देख लीजिए। It is difficult to define someone like Taro Chatung. While he is best known as a pioneer in the field of filmmaking and journalism in Arunachal, he was also a leader, an officer, a politician, a mentor at different times in his life. One thing that everyone agrees is that he was a man ahead of his times who followed his dreams when it was considered impractical to do so. The legendary Taro Chatung that we know today was born in his ancestral village Hija in Zero Valley. Late Chatung was born on 1st March 1963. His first education was at Hija village, Lower Subansiri district. Then after that, I was told that he studied in Don Bosco School, Tezpur. His college education at a degree college, Itanagar, which was affiliated to Chandigarh University. Then he completed his graduation from that college only. He cleared the civil service exams in 1986 and was posted as the circle officer in Anini, but he had other plans. He left his job in less than a week. Actually, he never returned, so missing report was given. So I told you go and report back, but he didn't listen to me. He took the exam for Arunachal Pradesh civil service exam. It must have been 1986, and he got through that. He got through the service, he went to join it, and he came back. I particularly remember he talking to me and saying, you know, like, Alu, हम तो अभी सीओ दे के आ गया, सीओ ज्वाइन किया और सीओ को छोड़ के आ गया। तो हमने पूछा, अरे भैया आप ऐसा क्यों क्या बोला है? नहीं, मैं तो सर्विस में इंटरेस्ट नहीं हूँ। फिर भी अगर हम सर्विस में इंटरेस्ट नहीं होकर बाहर में अगर काम कर रहा है, जर्नलिज्म कर रहा है, वीडियो कर रहा है, फिल्म शूटिंग कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो आदमी सोचेगा मेरा पास में पढ़ाई में कैलिबर नहीं था। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि मेरा पास ये भी कर सकता है, फिर भी मैं छोड़ना चाहता हूँ बोल के, इसलिए मैंने गया, 1 महीना रहा, फिर मैं छोड़ के आ गया हूँ। अभी मैं उधर जाना नहीं चाहता है, मैं अपना ज़िंदगी खुल के जीना चाहता हूँ। एक किसी का सर्वेंट लाइक वो केज वाला वो he always used to say I want to fly like a bird. वो चातुंग उसके लिए शायद पित नहीं था, और वो अगर आज वहाँ होने से फ्रस्ट्रेटेड होना था शायद, मेरे सोच है। It's probably from this point onwards that the real story of Taro Chatung begins. His dream was that not earning. Always he wanted to be the famous journalist and filmmaker. 35 mm, 70 mm में हम लोग ग्रुप में जाके देखता था। फिल्म देखने के बाद कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाता है। मैसेज पोम में अच्छा देना चाहता तो एक अच्छा फिल्म मेकर एक अच्छा मैसेज दे सकता है। His first film was Doni, made in 1986-87, and it dealt with the subject of inter-community marriage. इंटर-ट्राइबल मैरिज को इनकरेज करके स्टोरी बनाया। वो ज़माने में खुद ही दूसरा ट्राइब से शादी किया था। And then he made Meri Zindagi in the early 90s. Very little information about Meri Zindagi survives today. And then he made his magnum opus, the movie which made Taro Chatung a legend in Arunachali cinema, Frontier Students, a story about a group of disgruntled students who took on systematic corruption and the people who exploited it. मिस्टर तकसिया, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, लेकिन याद रख, तुम्हारी ये चुनौती सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। जब मैं क्लास 11 का स्टूडेंट था, आई थिंक इट वाज अराउंड 1993, उस वक्त जो है एक ही न्यूज़पेपर हुआ करता था, एको ऑफ अरुणाचल। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आया ऑडिशन के लिए कि कोई एक फ़िल्म बनाने जा रहा है तारो चातुंग नाम का आदमी का, तो उस फिल्म में ऑडिशन देना है वगैरह। ऑडिशन से लेकर फिर फिल्म के लिए जो ट्रेनिंग हुआ एक महीना के बाद जो सिलेक्शन हुआ, एंड आफ्टर दैट जो सारा फिल्म बनाने का एंटायर प्रोसेस हुआ 2 years के लिए। तो उसमें मैं उनके साथ जो है I was closely associated with him. Taro Chatung helped the project, taking on multiple roles and engaged nearly everyone he knew in various roles in the movie. चातुंग साहब हमको देख के बुलाया, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ, चलो हम लोग फिल्म बनाएगा। हम बोले सर हमको तो फिल्म बनाने नहीं आता है,
ना हमको कैमरा पकड़ने भी आता है, फिल्म कैसे बनाएगा? तुमको हम सिखाएगा। माँ, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो मैं ये चुनाव किसी भी कीमत पर लड़ूंगा और दिखाऊंगा कि राजनीति और छात्र संगठन में क्या फर्क है। As socially relevant as the movie's theme was, the execution was clunky at places. Littered with action scenes, the fight choreography is what the movie is mostly remembered for even today. Frontier Students was a super hit during its release and became one of the landmarks of Arunachali cinema. Yet despite the film's popularity, Taro Chatung never made feature films again. We used to pressurize him. Sir, come on, what about the next venture? We used to say like that. No problem, no problem. That was his attitude. No problem. हम बनाएगा, अभी बनाएगा, हम करेगा. वो बोलते रहता था. Viewers, as Arunachal Pradesh Congress Committee I. Taro Chatung came back, but in a new avatar, as a journalist. News and Views, a news program aired on Doordarshan Kendra Itanagar, made him a household name across the state. The first time I saw about Chatung Sir's work was, I think, way back when I was in school. There used to be this popular show in DDK, News and Views, and I used to see his work there. And as a young student who wanted to do something in life, I was really inspired and quite curious to see his work. Okay, viewers, now me reporting from PHQ Itanagar, right? I have seen here today mass plantation. Okay, it has come to know under the initiation of Mr. Rubun Hivi, IPS SPT, ये आज प्लांटेशन चल रहा है और अभी देखा जाए तो सबको तक गया जैसा लगता है, किसी किसी के हाथ में चाय है, दाव है, क्या है, लेकिन कोई का दिल में बहुत दुखी जैसा लगता है, लेकिन कोई बहुत मुस्कुराता लगता है. अरुणाचल जर्नलिज्म बिफोर न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड आफ्टर न्यूज़ एंड व्यूज़, और पूरा अपना ही एक तो जनर बना के गया हुआ है. उनका पहले न्यूज़ एंड व्यूज़ का पहले ठीक है अरुणाचल टाइम्स होता था, इको होता था, बट that was a very typical newspaper and a typical journalism जो ठीक है ऐसा. It was as per the script, a very mundane kind of thing. पर उसमें अगर जान लाया है तो न्यूज़ एंड व्यूज़ तारो चातुंग का ही जर्नलिज्म में दिया. With News and Views, he covered a variety of topics. Current affairs, politics, picnics, cleanliness drives. As far as Taro Chatung was concerned, nothing was off limits. पहले बार मैंने मास प्लांटेशन PHQ में देखा है और ऐसा खबर मिला है कि it is purely under the initiation of Mr. Robin Hibu, IPS, SPT. का मकसद क्या है आज का दिन का ये जो प्लांटेशन का लेके? हमारा कोई मकसद नहीं है, हम सब पुलिस. At times unintentionally funny. मेरा गाड़ी का ऊपर में 2 तो पत्र फेंका है. एक पत्र यहाँ बहुत जोरदार से लगा, ये बोनेट का ऊपर में आप जो दिखाई देता है, आप देख लीजिए ये कितना जोर से लगा होगा, बहुत जोर से लगा है. हालांकि मेरा गाड़ी में प्रेस लिखा ऑलरेडी ये विजिबल दिखाई देता है यहाँ. His zeal and persistence for breaking news and getting soundbite was legendary. तो हम याद है जो भी गुवाहाटी से दिल्ली से होते हुए गुवाहाटी से जब चौपर में हम उतरते हैं और जब नाहरलगुन हेलीपोर्ट में जब उतरेगा, सामने सबसे पहले दिखेगा तारो चातुंग खड़ा है. तो इस प्रकार का बहुत इंटरेस्टिंग वो प्रश्न पूछने लगता था, जो प्रश्नों हम लोग सडनली जिसको पता ही नहीं है वो सडनली पूछ देता था. तो हकीकत को निकालने के लिए कोशिश करता. तो जो किसी का भी अंदर में है, जो किसी को जानकारी नहीं है, उसको भी प्रश्न पूछने के लिए कोशिश करता था कि निकालने के लिए. His extremely direct and at times almost awkward style of questioning was legendary. आपको समझ में नहीं आता है, आप क्या यहाँ भाषण देने के लिए आया ना या मदद करने के लिए आया, हम समझ में नहीं आता है.
मैं तो मदद करने आया हूँ और मदद तो भाषण के माध्यम से भी होता है। तब तो समझ गया सर। यहाँ कांग्रेस आई का एक स्लोगन हम सुना है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इंद्र जी का नाम रहेगा, ऐसा बोलते ना। ऐसा में भी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक असम अरुणाचल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये लगता है। नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। The impact News and Views had on Arunachali society during its run was tremendous. I think the current generation of journalists who, you know, they actually owe him a lot, because I mean, imagine those days, even when procuring a camera was such a big affair, he managed to do that. I don't know how he did it, but he did it, and he did it every day. One lesser-known aspect of Taro Chatung's personality was that he was a mentor and a guide to many people. Even when, and at a personal level too, I would share things with him and I'd say, okay, there will be days when you are bored or when you are upset about certain things, but don't get bogged down, you know. And if there were some threats or something, he'd always reach out and ask how it is, and he'd tell also, and he'd always tell me, oh, बहन हम बात करेगा उससे, आप बोलो तो हम बात करेगा उससे. You know, those kind of, he was a very, a colleague who really, a much senior colleague, but who really, you know, regarded everybody's work. He was very down to earth. He was a typical Arunachali who was looking out for the other person, you know, trying to help. हम एवरेस्ट के लिए रेडी कर रहा था, सभी ने जाने। मेरे पापा गुजरने के बाद फिर चातुंग साहब मेरा आया, पापा का बदल में गॉडफादर का रूप में आया, पिताजी का रूप में। लोडिंग से लेकर टावांग तक सब अरुणाचल का आदमी लोग कंट्रीब्यूशन किया, डोनेशन में कदम कदम पर जाकर साथ दिया, पिताजी का रूप में और एडवाइज़र का रूप में। ये उसका तरह से पूरा डोनेशन काटा हुआ है, काटा होने बाद आज हम पहचान बनाए चातुंग साहब का तरह से। With the boom of social media platform and numerous online news channels, Taro Chatung seemed like a throwback to a bygone era. The people of Arunachal, I mean Arunachal ka janta. Nonetheless, after a brief absence, he made a comeback and became more visible in social media and digital platforms. At the end of 2018, the issue of granting PRC and land rights to non-APST population in certain pockets of Arunachal started making headlines. A joint high-power committee consisting mostly of the state legislators was set up to take a decision on the issue. The news report by Taro Chatung indicated that the committee had more or less decided to grant the demands for PRC, and subsequently the bill was about to be passed in the next assembly session. PRC का बदले का सपोर्ट करता है ना, सपोर्ट नहीं करता है? PRC को देना है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है ना? या PRC देने के लिए सपोर्ट करता है ना, अपोज करता है? PRC देना है। देना है, ये आपका स्टैंड है। जब असेंबली में टेबल रिपोर्ट करेगा तो देन आप उसमें डिस्कशन भाग लेगा होगा? गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ में, मतलब गवर्नमेंट जैसा डिसीजन लेगा, ऐसा आप सपोर्ट करेगा? ये उसी में मैं सहमत हूँ। I cannot forget the arrogance of those MLAs even today, you know. PRC का बात लेके आप बोल के देखिए, आप सपोर्ट करते हैं ना, सपोर्ट नहीं करते? अरे जैसा गवर्नमेंट बोले वही होगा, कैसे सपोर्ट करने का? मैं तो चेयरमैन हूँ जॉइंट हाई पावर कमेटी का, और ये सब मेंबर्स का सहमत है कि देना पड़ेगा, PRC देना पड़ेगा। I mean, forget about the issue. The way they responded to the question was terrible. Capital city of Arunachal, Itanagar, is on edge following violent protests over the permanent residence certificate, which is to be issued to certain tribes in the state. Many protesters taking to the streets today and creating a rampage. There were some section of people who blamed Taro Chatung and his reporting for the violence that ensued. A lot of people, especially the politicians whom I spoke, and many of them blamed Chatung sir, saying that his reporting on PRC provoked people, which led to violence. But that is absolutely wrong, because I would say it was because of Taro Chatung sir's reporting that people understood the gravity of the situation, that if this bill is passed, what is going to happen to the state and what will be the implication. I don't think he blamed himself, but he was very sorry about the violence.
And at the same time, I think he was at some point very upset at what was happening. And he was a very proud Arunachali, you know, not in a, I don't know the word. He was very proud of who we are, you know. And violence is not something we are known for or indulge in. I think that it kind of hurt him very deeply. As far as the average Arunachali was concerned, Taro Chatung was a hero who saved their rights with his timely reporting. आज वोट टेकिंग क्या है? वोट टेकिंग एक ऑफिशियली बहुत फॉर्मल वे में चलता है और वन ऑफ द एमएलए जब वोट टेकिंग ले रहा था तो उसका हाथ आराम से अपना पैंट का पॉकेट में रख के वोट टेकिंग चल रहा था, उसका एक झलक. Just when it seems that Taro Chatung was finally back to doing what he did best, news about his ill health began to surface. The word spread that he was terminally ill and may not survive for very long. After battling his condition for a few months, and despite the best efforts of the doctors, Taro Chatung passed away on 26 October 2019. Although not entirely unexpected, his demise left his loved ones absolutely devastated. Dedication messages and tributes poured in from every direction. People of Arunachal Pradesh mourned for their beloved Taro Chatung. चातुंग साहब जहाँ भी होगा आज हमको देख रहा होगा, हम बहुत मिस करते हैं अभी. I miss him. Taro Chatung was a man who lived his life in his own terms and pursued his dreams with passion. He did what he loved and he loved what he did, and he was loved by all. That's Taro Chatung in a nutshell. True Pan Arunachali. He's not with us anymore, but the countless memories he gave us will live on and stay with us for a long, long time. आप सब जानता है, पुराना साल जाने जा रहा है, कुछ दिन बचा हुआ है और नया साल आने जा रहा है. ऐसा जैसा ओकेजन में हर एक इंसान का ये अरमान होता है, इसी वक्त में पिकनिक चले, गेट टुगेदर अपना दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ. ओके, तो ऐसा जैसा समय में ये भी सोचता है कि नया साल को ओके वेलकम करेगा और पुराना साल को विदाई दे देगा, ताकि पुराना साल किसी के लिए बहुत कुछ सफलता हो सकता था और किसी के लिए कुछ भी नहीं लाया होगा. खैर बात छोड़ दीजिए है, फिर भी सुंदर से मतलब शांति से पुराना साल को विदाई देता है. ओके.